Good evening, ladies and gentlemen. Today marked Prime Minister Narendra Modi's first public engagement since his return from the SCO summit, a summit that turned heads worldwide. India, as a superpower, stood shoulder to shoulder with China and Russia, a huge geopolitical signal that sent a clear message to the United States of America. Saw China turning from a rival to a partner and ensured that Pakistan was cornered and sidelined. After such a successful trip, one would have expected the Prime Minister to speak of the achievement. But what we saw today was a man whose heart was heavy with grief over the vicious personal attack on his own late mother, just for the sake of politics and election. Listen in to a very emotional Prime Minister. माँ ही तो हमारा संसार होती है, माँ ही हमारा स्वाभिमान होती है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। Prime Minister's voice trembled, puckered as he spoke of the vile abuses hurled from a platform provided by the Congress and the RG. It has been almost a week since the abomination. And what do we have from the leading lights of the two political parties as a response? Absolute silence. Rahul Gandhi has wrapped up his Voter Adhikar Yatra lasting 16 days with a teaser for hydrogen bomb screening next. His co-traveler Tejasvi Yadav is still on the road, busy making dance reels. Take a look. माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। Well, ladies and gentlemen, the issue tonight is not just about the kind of politics. The issue is about targeting of a woman who's the mother of the Prime Minister, a woman who's breathed her last, a woman who was as far removed from politics as probably the sun from the earth. An outraged BJP is not letting go of this matter. It is all set to escalate the issue with a statewide bandh planned on the 4th of September. In a poll-bound state, it is all about narratives, and a slight on Prime Minister and his mother has in the past proven to be a major self-goal for the opposition. But have they ever learnt a lesson? Clearly not. Taking a cue from their own leaders, others in the ranks are going a step further. The Congress is hell-bent on accusing the BJP of orchestrating the abuse gate, completely ignoring the fact that Mohammad Rizvi, a local Congress supporter, is the one who has been arrested for using abusive language
against the Prime Minister. RJD goes a step further. Listen in to an official spokesperson of Tejasvi Yadav's team talking about the Prime Minister declaring him worthless as a son. अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं हो। मोदी एक बेटा के रूप में नालायक हैं। उनकी माता की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह एक कर्ता धर्म का पालन करते हुए सर और मूछ दाढ़ी ना मुड़वा ले। In just the last 10 days, the India Alliance has platformed people who have insulted not just the Prime Minister and his mother, but the entire population of Bihar. From Revant Reddy to M.K. Stalin, all found pride of place on Rahul Gandhi's Rath, despite their various and vicious attacks on citizens of the state, where they canvassed, without expressing any regret. UP Congress chief Ajay Rai slandered the entire rank and file of the RSS and got away without even a rap on the knuckles. And then there was the Trinamool Congress's MP Mahua Moitra, who called for Union Home Minister Amit Shah's head to be chopped off for failing to check the infiltration of illegal Bangladeshis into India. Not a peep from the proprietors of Mohabbat Ki Dukaan. Not one word. So, ladies and gentlemen, the legitimate question that we want to ask on the News Hour tonight, do Namdars consider it their adhikar to abuse? That's the question, and that's the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9, debate number 1, on Times Now, Super Prime Time. Joining the debate tonight, Charu Pragya, National Spokesperson of the BJP, Professor Jyotsna Tirunagri, National Spokesperson of the TDP, Dr. Anand Ranganathan, author, scientist. Also joining the debate tonight, Vivek Srivastava, political analyst, Professor Naval Kishore Yadav, National Spokesperson of the RJD. But my first question goes to Ashwini Kumar Mishra, leader of the Congress, with me in the studios tonight. And Ashwini Kumar Mishra, how unfortunate can this go? In politics, you abuse each other, you expose each other, you use tough words. All that has become part and parcel of politics that we have seen in recent times. But going to the Prime Minister's mother, abusing his late mother, who died at the age of 100, a simple woman who's even cleaned vessels to bring up her children. Today, she's not even here in this world. To bring her into this kind of electoral politics, abuse her, is this the new law that the Congress wants to set an example of? And my question is not only about the words that were used. My question is also about the 7 days of silence. Not one word, sannata, pin drop silence. Not one word from the Gandhis to say, hello, this is not the behavior we expect. Public, please rein in all your tough words that are abuses and fall in line. We will fight this election on issues and not on abuses. Not one word in the Mohabbat Ki Dukaan. ये कौन सी दुकान है? बंद है क्या आजकल? Narika ji, good evening to your viewers, and I wish you a very speedy recovery for your hand. Let me start by condemning the statement made, or condemning the language used for our Pradhan Mantri by a fellow who might be from Congress, might be from BJP, whatever party he is from. You should strictly punish him, and let us set an example. No, why are you washing over that fact? I'm not washing over the fact. He is from the Congress party. Haven't you heard your own leader Naushad talking about him? If you haven't, I'll play the soundbite out for Narika you. ji, you can play that later on. Let me first start by giving you some names. Prem Shukla, does it ring a bell? Who is Prem Shukla? He is the national spokesperson of Bharatiya Janata Party. Ramesh Bidudi, he is a member of parliament. Daya Shankar, he is also Bharatiya Janata Party. Vijay
Shah, Anurag Thakur, T. Raja, Satpal Singh Satti, all these names, when I say this, does it ring any bell to you that what all statement these guys has made? Satpal Singh Satti publicly abuses Rahul Gandhi ji and his mother, by the way. Is Rahul Gandhi mother different from Narendra Modi ji's mother? No. Because the DNA of Bharatiya Janata Party to use Gali as a tool for a voting politics. They can never win an election on the core political issues which is promised by Modi ji in rallies like 2 crores jobs, MSP for farmers, 15 lakhs in account, and there are, I have a big list which I can read it out here, but I don't want to do that because of shortage of time. The idea is that BJP but you were different, I thought. No, मोहब्बत की दुकान थी ना, आपके पास तो संविधान था ना, गुम गया क्या? नाविका जी बिल्कुल, मोहब्बत की दुकान बंद हो गई क्या? ग्राहक नहीं आ रहा? ये देश और देश का संविधान कभी नहीं डूब सकता नाविका जी, ये देश जो है लोगों से चलता है, मोदी जी Okay, लोगों से चलता है. So then answer the question. Answer the question. N.K. Stalin was there on the stage. The man whose son called Sanatan, what kind of names, but forget that. They called Biharis and they called Bihar and North India. What did they call them? आपको पता है या मैं बताऊं? और वो जो आपके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिहारियों के बारे में क्या कहा है? I want to ask you, all of them can stand there, ask for votes from the same Biharis they abused, but cannot say sorry for the abuse to the Prime Minister's mother. Really? Navika ji, Bharatiya Janata Party is victim of its own sin. But it is the DNA of Bharatiya Janata Party to use the politics around all these false narrative which is not in line with the which part of this is false? Which part of this is false? Please name which part of this is false. It is scripted by Bharatiya Janata Party. How is Bharatiya Janata Party doing vote chori and also scripting your rally? How are you so inept that they can run your rally sitting here, Charu Pragya? Are you running the rallies of the Congress and the RJD? कि आपके लोग वहां जाकर कुछ बोलते हैं, इनको पता ही नहीं चलता? Navika ji, namaste. Before I say anything, Ashwani ji has a habit of interrupting. So like I allowed him to speak, may he also kindly allow me to speak. Amen. Now we come from a cultural land where our Sanskriti actually says that the feet of our mother is holier than even being in Swarg, better than being in heaven. That's the kind of mindset Indians are raised with. We say Matra Devo Bhava, and we say it before taking our father's name, before taking our guru's name. That's the position of a mother. Now this mother of our Honorable Prime Minister has been abused by a person. She is not in public life. She is not a part of the political spectrum in any manner whatsoever. She is not even in this world. Yet these abuses were hurled at her on a stage which welcomed Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav, on a stage decorated with the photos and posters of the princes of both these parties, and on a stage where nobody thought to stop him while these abuses were being hurled. Nobody stopped him. Navika ji, let's remember this. That stage was full of young Congress Karyakartas, RJD Karyakartas. Nobody stopped him. In fact, from the stray people who still were hanging around, enjoying this, applauding this, no word of condemnation came out. You know, when did that apology come? Much later, after the video went viral. So today, Congress cannot hide behind anything. They cannot hide behind anything. The second thing I want to say is that both these princes, Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav, are sons of mothers who are in active political life. Sonia Gandhi ji, Rabri Devi ji. Why have we not heard a word from them? Not a peep. Somebody's mother is being abused. She's not even in public life. Your children have been raised so terribly, so badly, and you have nothing to say about it. Now it is one thing, Navika ji, when Rahul Gandhi stands on stage and uses words like "Eh Modi," "Tu Modi," I don't even want to repeat it. I don't even want to repeat this kind of language. But you know what happens? मोदी को ट्रम्प का फोन आया, उसने 4 घंटे में सरेंडर किया. You know, almost as if we are talking. Other side of your brain, Charu ji. Why? First of all, I don't think you should use the kind of language for Rahul Gandhi ji. I'm not interrupting you, but the kind of language you are using for Rahul Gandhi is not acceptable. And moreover, ensure that you have both sides of memory in your brain.
contribute and Why I finish speaking my is point. Surendra Rajput's mother is different from Narendra Modi's mother? इनकी माँ उनकी माँ से अलग है क्या? सोनिया गांधी किसी की माँ नहीं है, सुरेंद्र राजपूत की माँ नहीं है। नो डिबेट नाविका जी। नहीं, व्हाट इज दिस चारू जी? आपको आपके लिए सिलेक्टिव सिर्फ मोदी जी की मदर है, बाकी लोगों की मदर नहीं है क्या? एंड स्टॉप यूजिंग डेरोगेटरी नॉट पार्लियामेंट्री टर्म फॉर ऑलराइट, चारू रिस्पॉन्ड। Can he stop? Navika ji, now I am trying to tell Ashwini ji, though he cannot refrain from interrupting every single time, the fact that their prince uses this kind of language for not just our honorable Prime Minister, but for a man who is senior in age. He's senior in age. He calls him tu and he's comfortable. Now that's the kind of upbringing he's had. So I'm sorry, Ashwini ji, you better not be defending this. Now obviously his कार्यकर्तास to score extra brownie points are going to think दो चार गालियां दे दिया तो बॉस खुश हो जाएंगे, बॉस ताली मारेंगे. This is what is happening, Ashwini ji. The very fact that you're here on national television defending that statement is a shame. And it's a shame not just that belongs to you, it's a shame that belongs to both your political parties, because I ask you again, where are words of condemnation from Rahul Gandhi, from Tejasvi Yadav, from Sonia Gandhi, from Priyanka Vadra, from Rabri Devi? There have been none. And I do not actually expect any better from a political party that applauds statements like Modi teri kabr khudegi, calling him things like Gandhi Nali ka Kida and Neech and Rakshas. That's passe. I don't want to repeat that they have done again. for so long that it's probably something every Indian today knows. It's not, but I want to ask Naval Kishore ji. Navika ji, it adds up. Yeah, it adds up, but obviously the Samvidhan with the blank pages, it doesn't add up anything. But Naval Kishore ji, politics अपनी जगह है. And ड्यूरिंग इलेक्शंस थोड़ा सुर सबका तेज होता है, सबकी भाषा थोड़ी तीव्र होती है. ये हम लोग अब समझ चुके हैं और इसको जनता भी समझ चुकी है. लेकिन किसी की मां को गाली देना शायद एक लक्ष्मण रेखा और पार हो गई आज की राजनीति में. और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सभ्य समाज, सांस्कृतिक समाज में इसकी कोई जगह है? मां की जगह क्या होती है तेजस्वी जी भी जानते होंगे. राबड़ी जी की बहुत, और मैं आजकल उनकी जब देखती हूँ रील्स में, राबड़ी जी अपने पोते के साथ खेल रही है, तेजस्वी के साथ हैं, अच्छा लगता है ये देख के, क्योंकि ये हर मां का ये इमोशन होता है. वो कहते हैं ना कि सूद प्यारा, असल से भी सूद प्यारा. और ये इमोशंस हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है. यहां पर मां की गाली की कोई जगह है? और मां की गाली किसी ने दी. एक हफ्ता था, कम से कम कोई डांट, कोई फटकार, कोई माफी, कुछ तो हो सकता था. क्या दिखाया आपने और आपकी पार्टी ने? सिर्फ सन्नाटा. नवल किशोर जी, इज दिस एक्सेप्टेबल टू यू? नाविका जी, आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है. इतना जबरदस्त पृष्ठभूमि आपने दिया है. सिर्फ कुछ बातें हैं जो आप नहीं बोलना चाहती हैं, या नहीं बोलने का आपने पृष्ठभूमि नहीं जोड़ा कि पिछले 11 साल में जो सत्ता के शीर्ष पे हैं, उन्होंने किस तरीके से विमर्श को स्तर को नीचे गिराया है, ये आपने नहीं बोला. आपने ये नहीं बताया कि सदन के अंदर संसद अपने साथी सांसद को किस तरह से गालियां दिए हैं, ये आपने नहीं बताया. आपने ये नहीं बताया कि किस तरीके से नीतीश कुमार जी के डीएनए पर, पूरे बिहार के डीएनए पर सवाल नरेंद्र मोदी ने, आपने स्टालिन का नाम लिया, आपने दूसरे का नाम लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया कि 2015 में पूरे बिहार के डीएनए को उसने सवाल. मुझे लगा आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि आप तो खड़े थे ना उनके साथ, वो जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री. मुझे लगा ये आपको मैटर ही नहीं करता. बिहारियों को गाली दे दी तो क्या फर्क पड़ता है? आप तो ताली बजा रहे थे, पूरी आरजेडी ताली बजा रही थी. तो देखिए, वही लोग थे वहां. देखिए ताली और सुन लीजिए. अब आप हम ही को नहीं बोलने दीजिएगा तो फिर कैसे जवाब मिलेगा? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बहुत डर रही हूँ, महिला हूँ, डर रही हूँ. बहुत काम किया उसको
फिर वही बात है, आपको जिससे डरना चाहिए उससे डरती ही नहीं है। हम लोग दलित पिछड़े लोग तो महिलाओं का सम्मान करते हैं और उसके लिए जाने जाते हैं। गाली तो जो सदियों से सुन रहा वो क्या गाली देगा? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए सवाल ये है प्रधानमंत्री की माँ कहाँ से आती है? जिसका मुखिया खुद ही कहता है। नहीं, प्रधानमंत्री की माता जी कौन से जाति से आती है, बता दीजिए जरा। जो आप कह रहे हैं कि दलित पिछड़ों की हम आदर करते हैं, बता दीजिए ना वो कहाँ से आती हैं? आपने अभी भारतीय संस्कृति पे बहुत बड़ा लेक्चर दिया, तो आपको ये नहीं मालूम है क्या कि जाति यहाँ पर गाली के नाम से चलती है? पूरा जात के नाम से लोग गाली देते हैं। अब ये सब बात मत कहिए, ये बात कहिए कि राजनीति में जो गिरावट नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है, जिसमें कि जर्सी गाय कहा है किसी सम्मानित महिला को, जिन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा है, जिन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है, जिनके अपने साथियों ने, सांसद साथियों ने अपने ही सांसद साथियों को संसद सदन के अंदर गाली दिया है, मंच से खुलेआम जो गाली दिया है। अनुराग ठाकुर कैबिनेट के मेंबर हैं, ऐसे हजारों लोग हैं और पिछले 11 साल में उनको चमत्कारी पुरस्कार मिला है मोदी जी से। आपने बोला कि जो राजनीति में नहीं है, अरे जो राजनीति में है उसको भी क्यों गाली देंगे? हम तो मुद्दे पे विमर्श कर रहे हैं और पूरे बिहार में यह चर्चा का विषय है कि जो मुद्दे पे नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए गहन विमर्श करके मीडिया साथियों से नवल जी, आपके भाषण के बीच में गाली तो माफी क्यों नहीं मांग रहे आप में से कोई? नहीं, माफी क्यों नहीं मांग रहे? इतना चिल्ला रहे, भाषण दे रहे हैं, अगर आप इतना सच्चे खड़े हुए हैं कि गाली चाहिए तो आपके नेता कहाँ है? माफी क्यों नहीं मांग रहे? मतलब हद कर दी, पहले चोरी फिर सीना चोरी और फिर आप चिल्लाइए। गाली दिया हमारा कोई सदस्य नहीं है, हमारे कार्यकर्ता गाली दे ही नहीं सकते। कितना गाली देने वाले, गलत बोला, गाली देने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, आतंक फैलाने वाले, दंगा फैलाने वाले, उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आपके रिकॉर्ड में है। आपके लोग हैं वो जो दंगा फैलाते हैं, गाली देते हैं, तमाम तरह के रेपिस्ट आपके पार्टी में। आप क्या बात करेंगे? आप केवल टीवी चैनल से तो चिल्लाना ही पड़ेगा, धरती के लोगों को अपनी आवाज सुनाने के एजेंडा नहीं सेट होने वाला है। बिहार की जनता विमर्श को जगह देता है, बिहार की जनता विमर्श को जगह देता है। ताली और थाली बजाने वाले नहीं है वहाँ पर जवाब देते हैं। आप 14 दिन बोलना चाह रही हूँ। वाह, वहाँ पर विमर्श ही तो हो रहा था। वो प्लेटफॉर्म पे जहाँ प्रधानमंत्री की माता जी की गाली हो रही थी, वो विमर्श का तो तरीका है। नवल किशोर जी, एक आप बिहार में पले बड़े हैं, एक मैं भी बिहार में पली बड़ी हूँ। मेरी जुबान तो ऐसी नहीं है जैसी आपके वहाँ जो दिखाई गई प्लेटफॉर्म पर। अरे भारतीय जनता पार्टी का माफ कीजिएगा, मैं भी बिहार से ही हूँ। पूरे स्कूल की शिक्षा मैंने बिहार में पाई है, लेकिन ऐसे शब्द बोलने नहीं सीखे मैंने। बिहार में ही रही हूँ मैं। आप लोग सीख गए, हमने नहीं सीखा। अब ये तो संस्कार की बात है। लेकिन ज्योत्सना जी, आई वांट टू आस्क, बदनाम कर रही हैं। मैं बिहार को बदनाम कर रही हूँ और आप नाम रोशन कर रहे हैं। आपके प्लेटफॉर्म से नाम रोशन हुआ था बिहार का, जहाँ गए गालियां बोली गई थी। आप बताइए, दिलीप जायसवाल ने बोला कि गाली का डिक्शनरी है मेरे पास। आपने डिबेट किया उस पर, क्या बात करती हैं आप? बिहार को बदनाम कर रहे हैं और भाजपा के कहने पे कर रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे ये बता दीजिए, आपने रेवंत रेड्डी जी के किसी भी स्टेटमेंट का कहीं पर भी आपने पुरजोर उसके खिलाफ कुछ कहा? दिखा दीजिए ना, दिखा दीजिए, मुझे वीडियो भिजवा दीजिए ना तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी का नहीं है तो अपना ही भिजवा दीजिए। आपसे सवाल, आप तो रेवंत रेड्डी जी के साथ खड़े थे जब बिहारियों को जिन्होंने गालियां दी हैं। आप मुझे बताएंगे संस्कार। लेकिन ज्योत्सना जी, I just want to ask you one question. That something was said from a platform is one part. That there was a week in between, a week of pin drop silence. What does that tell you about the opposition in Bihar? They can't defeat the Prime Minister
on the ground where people are, in the court of the public, and therefore they have to resort to this kind of name calling? Navika ji, first and foremost, I'm not even talking politics now, Navika ji, about all these things. आप जो election ये सब के बारे में नहीं बोल रही. What I believe is this is not our values. ये अपने values नहीं है, भारत के values नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है. Because we deserve, a vision for the nation. Any election that goes on, for example, any election that we are talking about, if I have to talk politics as you have asked me a question, we need politics of vision, not politics of vile abuse. और ये जो डिबेट चल रहा है ना, ये जो इन लोगों ने गाली दी है, जो भी किया है नविका जी, it's not about, right now I'm not talking about Modi ji, I'm talking about Ma, a mother. I'm a mother, you're a mother. We have so many, people who are literally pained. Mothers are pained with such kind of things. I'll tell you one thing, Navika ji. जहाँ पे सर एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, बोलने का मौका दीजिए, एक माँ को बोलने का मौका दीजिए. मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि मुझे बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि एक माँ का जहाँ अपमान, सर इसीलिए बोल रही हूँ, मेरी इज्जत करिए, मैं भी किसी की माँ हूँ, मुझे बोलने का मौका दीजिए. सर जहाँ पे माँ का अपमान होता है ना, आप भी सर फिर मुझे बोलने का मौका दीजिए. सर फिर मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए. मैं जब आप बात करें, मैं बात नहीं करी, तो मुझे बोलने का मौका दीजिए. जहाँ पे माँ का अपमान होता है सर, जहाँ पे माँ का अपमान होता है ना, वहां पे पूरा, चाहे वो राष्ट्र हो या कुछ कहीं पे, दैट सोसाइटी इज लिटरली इंसल्टेड. एक चीज बताती हूँ मैं नविका जी, 2019 से लेके 2024 तक या आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जी का सरकार था, वहां पे हाउस ऑफ, मतलब असेंबली में साक्षात वहां पे भी माँ का अपमान हुआ था. लोगों ने वहां पे ऐसा खींच के लिटरली थ्रोन डाउन जगन मोहन रेड्डी ऑन द ग्राउंड. ही वाज लिटरली स्मैश्ड फ्रॉम 151 सीट्स to 11 seats just because he has insulted a mother, just because he has insulted a woman. That's the power of a mother and a woman. And these people again are repeating the same. And आप बार रेवंत रेड्डी का जो नाम ले रहे हैं ना, आप बार रेवंत रेड्डी जी का जो नाम ले रहे हो ना, सर एक मिनट सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज. रेवंत रेड्डी जी का जो आप बोल रहे हो बिहार की जनता, सर मुझे बोलने का मौका तो दीजिए. मैं सच्चाई बात कर रही हूँ सर, मैं सच्चाई बात कर रही हूँ. मेरी आवाज को दबाओ ना. कौन है वो, क्यों गाली दिया आप हम लोग को, क्यों कटघरे? मैं बात कर रही हूँ, आप मेरी आवाज को दबाओ ना. जो रेवंत रेड्डी जी है, नविका जी आपको शायद ये नहीं पता है, वो खाली बिहार जाके बिहार की जनता की खाली इज्जत नहीं निकालते, उनका अपमान नहीं करते. साक्षात तेलंगाना में जहाँ पे वो सीएम है, वहां पे भी जब महिलाओं का अपमान हो रहा है, उनके सरकार ने ट्राइबल वुमेन को, आदिवासी महिलाओं को वहां पे जो अपमान किया है, उन्होंने आज तक उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला. मैं एक ही चीज बोलती हूँ, वी हैव टू टॉक ऑन अ moral high grounds, Navika ji. I'm really pained. It's not about Modi ji, it's not about Rahul Gandhi ji, it's not about anybody else. It's about a mother being abused. It's about a mother being abused. It's about a mother being abused. Sir, उस चीज को थोड़ा आप समझिए, उस चीज को समझिए. मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया. यही चीज what do you mean by petty politics? No, what do you mean by petty politics? Because talking about his mother, does a man not have the right to talk about his mother? You cannot win election on the real agenda. That's why you're creating all these narratives. What is the real agenda that you highlighted in Bihar? Real agenda is, where are those jobs you promised? Where is that development you promised? Where is that smart city you promised? The only way you can win election is either vote chori or doing this kind of abusing a woman is not politics, sir. I'm sorry. I cannot accept that. Abusing a woman is not politics. You are a woman. You must condemn what Mr. Prem Shukla said. You must condemn what Satpal Sakti said. Is Sonia Gandhi not a mother? Let me just tell our viewers about all the greats in the opposition who were in Bihar in the Adhikar Yatra. Well, there was Telangana Chief Minister Revanth Reddy, whose earlier words are
Telangana DNA is better than Bihar DNA. Dayanidhi Maran of DMK who has said Biharis clean toilets in Tamil Nadu. गुस्सा तो नहीं आया होगा आपको? नवल किशोर जी गुस्सा तो नहीं आया होगा ना? क्वेश्चन द डीएनए ऑफ बिहार, व्हाई आर यू नॉट क्वेश्चनिंग? आप रेफर क्यों नहीं करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के डीएनए पे सवाल उठाए थे? आप क्यों नहीं बोलते हैं? बोलने से डरते क्यों? पर आपको तो फर्क नहीं ना पड़ता। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो रेवंत रेड्डी जी के साथ खड़े थे ना, उन्होंने भी तो डीएनए का क्वेश्चन किया था। आप तो उन लोगों के साथ दोस्ती करके बैठे हैं। सवाल सिर्फ मोदी जी से ही है। बिहारीज लैक द ब्रेन्स, तमिलियंस हैव, स्नैचिंग अवे जॉब्स फ्रॉम तमिलियंस, KN Nehru DMK. Problem is in the entire UP Bihar society. Raja of DMK. People in North India sell pani puri in Tamil Nadu. RS Bharti DMK. Anand Ranganathan. Ab you are a Tamilian. I'm sorry I have to put this question to you now. These are the statements of all those great leaders who were present in the Bihar rally. And what they think about Bihar, I've just read out a snapshot. And of course, the Prime Minister's mother, after all, the Prime Minister is fair game, fair target for the opposition. His late mother is also not spoiled. She also is dragged into this. The lady has passed away, and passed away at a ripe old age of 100. We don't have respect for a departed soul, and we bring her into this tutu meme of politics. Does this not nauseate you, Anand Ranganathan? First of all, good evening, Navika, and good evening to my fellow panelists, and so nice to see you back and wishing you a very speedy recovery. You look fitter, stronger, younger, and good luck to you. There are two issues out here, but before I come to the thrust of my thesis, I couldn't help because Professor Saab, please don't interrupt me. मेरी टर्न जो है आधे घंटे बाद आई है. I was listening to you patiently. Thank you. You are a very dear friend. So, okay, all right. Yeah, of course. बिल्कुल, बिल्कुल. All of us wish Navika a very speedy recovery. मैं आप पे आने वाला था, Navika. Before I come to the thrust of the topic, I couldn't hear. मेरे पे मत आना, please. थोड़ा बहुत injured मामला है यहाँ. मेरे पे मत आना. जल्दी ठीक हो जाइए, जल्दी ठीक हो जाइए. देखिए, नवल जी ने बहुत बातें करी, सब पैनलिस्ट ने करी, लेकिन नवल जी प्लीज. एक चीज नवल जी ने कहा कि आरजेडी सोच भी नहीं सकता कि हम ऐसे भद्दी भद्दी भाषा का प्रयोग करेंगे, और हम नहीं करते. मतलब जिसे ये वो मुहावरा है ना, अभी तो मेहंदी का रंग भी नहीं गया था. मैं इनको याद दिला दूं कि 1 साल भी नहीं हुआ है कि एक रैली में जिसमें तेजस्वी जी थे, चिराग पासवान जी की माता के इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई कि चिराग पासवान जी ने तेजस्वी जी को चिट्ठी लिखी कि आपके कार्यकर्ता इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और आप मंच पे बोलते चले जा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, शर्म नहीं आ रही. तो ये जरा नवल किशोर जी, आपने जरा मेमोरी जरा ताजा कर लीजिए कि आरजेडी भी इसमें शामिल है. सदन में होते हैं, उनके एमपी दूसरे एमपी को गाली देते हैं. वो तो इलेक्टेड मेंबर है सर. कहां नहीं, are you justifying, Naval Kishore ji, are you justifying abuses now to Chirag Paswan's mother also? All as part of election rallies? सवाल तो सुनिए. अरे देखिए, आप सवाल तो सुनिए पहले. प्रधानमंत्री जी सदन मेरी बारी है. बहुत सारे मिनिस्टर सदन में होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सदन में होते हैं, और खुलेआम गाली देते हैं. All right. उसको कहां? Anand Ranganathan, go on. All other faders down. थैंक यू. मैं बस ये दिखाना चाह रहा था नवल जी की hypocrisy when he says that every other party does it, especially BJP, but RJD doesn't do it. I was citing a fresh example where RJD did exactly the same thing what was done to Mr. Narendra Modi's mother, to Mr. Chirag Paswan's mother. He was so disappointed. He was saying, मेरा भाई मंच पे तेजस्वी भाषण दे रहा है और वो ये सब गालियां सुन रहा है मेरी माता जी के प्रति. मैं ये बताना चाह रहा था. Now let me come to the issue. Everyone has spoken and everyone is right to an extent. It is another matter that today all those people who used to deride whataboutery are resorting to it. They are talking about what about when BJP has said this, what about when Modi said it. Fair enough. At least from now on they will agree that whataboutery is a legitimate reason to expose the hypocrisy of people who say we never do this, you do it. Now,
The point, Navika, is not that politicians abusing each other. They do it all the time. Every politician from every political party done it. But you know what is so, I don't know, it's just dangerous, is that Congress leaders have normalized the threat and the demand for assassinating Modi. Let me give you 5 concrete examples. Congress leader Nilay Kangan said, I am surprised and disappointed why Modi has not been assassinated yet. Imran Masood famously said, we will chop Modi into pieces. You have Raja Kataria who is saying, if you want to save the constitution, you got to kill Modi. You have Karnataka leaders Gopalakrishna and Jayachandra saying, burn Modi alive, kill Modi. These are just 5 instances where Congress leaders have normalized asking for, demanding for the assassination of Modi. This is not mere some abuse or invective thrown each other against each other in the heat of the poll. No, this is a primer to, if something like that, for example, if you remember, happened to Trump, many people normalized it. He deserved it. This is what worries me, that our discourse has plummeted to such an extent that there are leaders that are wanting to kill Modi. Well, if you're worried about that, wait till I now show you what is the latest that is coming from a Congress leader in Karnataka. In an example of sexism, this time from an 8-time Congress MLA in Karnataka, R.V. Deshpande, when requested for a super speciality hospital by a senior female journalist, she was told, you know what? I mean, I really don't know where to go and hide my face. He said, she was told that it will be done for her delivery. So a super speciality hospital will be created for her delivery. And after that, he also winked at his supporters. Please, I'm not saying it. Please watch this. Please watch this. And Ashwini, when you play this out, Sharif Bhai, I want everybody's expressions to be seen by the people of India today. Let's play out R.V. Deshpande, 8-time MLA of the Congress party. My God. ಏನ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಿಮ್ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಆಯ್ತು. This is what he said. Ashwini Kumar Mishra, I hope you're feeling proud to be a congressman today. When a woman journalist, when she says कि भाई लोगों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ है, तो विवेक श्रीवास्तव जी, what is your response? And look at the gray hair on the man's head. He's not some youngster who's made a mistake. This sexism, this complete degradation of any form of decorum is what we are seeing on display by the Congress party. देखिए बड़ी क्लियर सी बात है, ये श्रीमान जी जो कह रहे हैं गलत है एंड वी आर नॉट इन फेवर ऑफ इट. लेकिन सफेद बाल तो एमजे अकबर के भी थे. सफेद बाल तो जब मीटू चला था तो मैं 50 भाजपाइयों को दिखा दूंगा आपको रिकॉर्ड. लेकिन प्रॉब्लम इज यू आर सिलेक्टिव. एमजे अकबर ने रिजाइन कर दिया, शायद आपने नोट नहीं किया. कब रिजाइन कितना रेजिस्ट किया था, सुनाओ कहानी उनकी. नहीं रेजिस्ट किया था. रेजिस्ट किया था. मिनिस्टर बनाने से पहले पता नहीं था कि कितनी महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ था. कोई रिसर्च नहीं किया था प्राइम मिनिस्टर ने. What are you saying? Anand Ranganathan, the legal case in this. Let me complete. No, 1 second, Vivek, please. Yeah, sorry, I don't normally interrupt you, but please hear me out for 5 seconds. Please, I don't normally interrupt you. Please hear me out for 5 seconds. Please do not talk of Me Too instances. None of them have been convicted by the court or declared guilty. बहुत अच्छी बात. Many of them, in fact, the court, especially in the case of Alok Nath, said false charges were levied on him. So please don't do this out here. आप सुनिए sir. I mean, the evidences were not being provided because a lot of time has lapsed. By the time the victims... So you are justifying what R.V. Deshpande said to a lady journalist? Why there is no super speciality hospital? And he says for your delivery we will arrange it? Are you justifying that statement? Are you justifying the gali to the Prime Minister's mother? You should listen to me first properly. I said I criticize him, but I said, Navika, you are selective. You do not raise a finger on any Bhajpai who exploits women. माँ सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है. वो नरेंद्र मोदी जो कभी अच्छे बेटे नहीं थे, ना माँ के साथ रहे,
वीडियो, और बाद में जब प्राइम मिनिस्टर बने वीडियो ला करके रील बनाई। Charu Pragya, you know, look at the justification that is happening on live television. You know, where Vivek Srivastava is now trying to get away by justifying even R.V. Deshpande and saying, okay, why are you selective? We are talking about a lady journalist, we are talking about the Prime Minister's mother, and we are being selective. Charu Pragya. Sorry, I will not allow this. He is casting aspersions on the relationship between the late mother of Prime Minister. Yes, I am. How dare you? No, how dare you? Are you the certification authority on who's a good son and who's a good daughter? The law they have Why can't I? सोनिया गांधी के लिए आप अपोलोजाइज कराइए पहले प्राइम मिनिस्टर से। जर्सी गाय क्या होता है? हाइब्रिड बछड़ा क्या होता है? 50 के 1 दिन में क्या होता है? फेक न्यूज। कोई फेक न्यूज नहीं है, बकवास बंद करो और प्राइम मिनिस्टर को बोलो पहले अपोलोजाइज करें। Did Prem Shukla not abuse Suren Rajput's mother on TV channel? Did Satpal Singh Satti not abuse Rahul Gandhi and his mother in a public rally? Did Daya Shankar did not do a name calling to Mayawati? I don't want to use those words. How many times Pradhan Mantri Modi ji has apologized for those things? And moreover, this is not done by Congress Karyakarta. He's talking about the Jersey cow and the other comments and not the comments that you're doing. Anand Ranganathan fact check. Anand Ranganathan fact checking Ashwini and Vivek Srivastava. Go on. Yeah, first of all, I completely condemn in the harshest possible words this aspersions being caused, by Vivek Srivastava on the relationship between Prime Minister and his late mother. It is unacceptable. Number one, nobody should do this. Now, please allow me to finish. Facing the feet of your mother in the camera. You are not interested in the mother. You are more interested in the photographs. This is it. नाविका, आपने शायद अपनी माँ के कभी पैर नहीं धोए, इसीलिए इतने ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है. But lowering your fader, Anand Ranganathan. Thank you. Now let me explain. It's actually rather amusing, but at the same time, it is a bit disappointing as well that the comments were made. The Prime Minister was explaining that while in the 60s the Congress was a nationalistic party, its symbol was cow and calf, indigenous cow and calf. Nowadays, the symbol is of Jersey cow. He never even mentioned Sonia Gandhi. This is the problem. On another TV channel, Navika, I heard a Congress spokesperson saying Narendra Modi accused someone of being Shroopnakha. Again, fake news. He never used the words, and clearly this is a situation where there is no defense left. And we asked this question. We did a short survey on social media. Late mother abused, Prime Minister pained. Will people punish Rahul Tejasvi? Is this the turning point of the Bihar elections? Yes, say 84% of the people who responded. No, say 16% of the people. 84% of the people believe that this is the turning point, simply because people are today fed up of the level of politics. There are no questions, there are no answers. Abuses galore and not even sparing the late mother of the Prime Minister, not sparing journalists, lady journalists who are asking questions on behalf of the people. If they are not spared, what are we really talking about? What is the democracy that we are talking about? And really, what is the standard of the Mohabbat ki dukaan that we are talking about? My question is just one that I want to ask tonight. The part where the abuse came is one part of the entire story. The next 7 days are where I rest my case. 7 days of silence. 7 days, not one word by the two young leaders, Tejasvi Yadav and Rahul Gandhi. 7 days in which they could have apologized, taken action. But 7 days of silence, ladki hu lad sakti. What about the mother who's not even alive to fight her battle? What about the mother who just has passed away? A mother who doesn't know anything about politics, knew only about how to raise her children in the best possible way she could. That woman is not spared in this country. Is this the Bharat we want to build? It's a question people of India are asking. We leave it at that.
Thank you very much to all my panelists for joining me on debate number 1.